Effect of substituent on acidic strength of carboxylic acid. R group is or alkyl group are electron donating in nature or it show positive inductive effect. So it increase the electron density, hence destabilize the carboxylate ion. R group increase the electron density on oxygen atom of OH bond. So the release of proton from here become difficult. So methanoic acid is more acidic than ethanoic acid, propanoic acid, like this way butanoic acid, because the R group increases step by step. In ethanoic acid, then propanoic acid, then butanoic acid. Electron withdrawing group. Electron withdrawing group show negative inductive effect. Electron withdrawing group withdraw the electron density toward itself and stabilize the carboxylic ion. So acidic strength increases. Electron density on oxygen atom of OH bond will tends to decrease. This facilitates the release of proton by making OH cleavage easier. So acidic strength increases. For example, fluoroacetic acid. Here fluorine is electron withdrawing group. So fluoroacetic acid is more acidic than ethanoic acid. Now the acidic strength depend upon following factors. Nature of halogen atom. More the electronegative halogen atom, it show more negative inductive effect and it increases the electron density. So it decreases the electron density. Cleavage of proton from OH bond become easier and acidic strength increases. So fluoroacetic acid is more acidic than chloroacetic acid, then bromoacidic acid, then iodoacetic acid. Next is number of halogen atom. More the number of halogen atom, more it show negative inductive effect or they withdraw the electron density and stabilize the carboxylate ion, and the acidic character is more. So more the number of electron withdrawing group or halogens, more is the acidic strength. So trichloroacetic acid is more acidic than dichloroacetic acid, than monochloroacetic acid. Next is position of halogen atom. कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ का जो पहला कार्बन होगा उसे हम कहेंगे अल्फा, उसके नेक्स्ट वाले को कहेंगे हम बीटा, इस तरह से अगले वाले को कहेंगे हम गामा। तो पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम जितनी नज़दीक होगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीजिंग होगी, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या हेलोजन नियरर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी बिकॉज नेगेटिव आई इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। जितना दूर जाएगा विड्रॉइंग ग्रुप
उतनी आसानी से वो अपनी ओर इफेक्ट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन को नहीं कर पाएगा, और जो क्लीवेज है वो OH बॉन्ड से H की वो डिफ़िकल्ट होगी। तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑल्सो इन्फ्लुएंस द एसिडिक करेक्टर। इफ इट इज प्रेजेंट ऑन अल्फा पोजिशन then it is more acidic, or if present on beta position it is less acidic. So chloro या alpha chloro propanoic acid is more acidic than beta chloropropanoic acid.